start with natural resources. So let's study about first land resource. So land is a natural and free gift of nature. It is a prime and vital resource, right? It is used for many things like cultivation of crop, grazing of animals, mining, setting up of industries, and man has been using land since aboriginal state. So the basis of difference in human needs and requirement, today vast forest area and grasslands are being cleared and turned into agriculture. जिससे क्या हो रहा है, जो नीड्स है ग्रोइंग पॉपुलेशन की वो इंक्रीज कर रही है एंड इट हैज़ गिवन द वे टू इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सेटलमेंट. लैंड कवर 30% ऑफ टोटल एरियाज एंड रिमेनिंग 70% पार्ट इज नॉट सुटेबल फॉर हैबिटेशन. So it has only 10% of total population, about 60%, 66% जो है वो किसको confined है, आपकी सब ट्रॉपिकल रीजन. लैंड यूज पैटर्न्स, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट रीजन, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, आपका ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, ह्यूमन सेटलमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. दे आर लैंड यूज पैटर्न की अगर हम बात करें, द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन. Right, some regions have higher proportion of land under cultivation and other human activity. Right, means of transportation, economic condition, people and population density, they are important social economic factor जो किसको influence करते हैं, land use pattern को. So Trans-Siberian Railway has completely changed this backward and underdeveloped region into advanced and development. So let's study about the different methods or different things. First is global pattern. If we talk about global pattern, the United States Food and Agriculture Organization वो estimate करता है कि जो total world's land area है वो 11% है total land area of the world का at present in under cultivation of crop. Right, 26% constitute permanent pasture land, 30% forest and woodlands, 33% other land area which is unused but potentially productive. Right. नेक्स्ट इज लैंड यूज इन इंडिया. टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, 330 मिलियन हेक्टेयर जो आपका अवेलेबल है. अबाउट 43% लैंड एरिया ऑफ द कंट्री अकाउंट्स फॉर प्लेन्स एंड व्हाट दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कल्टिवेशन. 30% आपका माउंटेन है एंड इट्स प्रोवाइड नेचुरल ब्यूटी एज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस. 20% जो है आपका प्लेट्यू है एंड टोटल एरिया जो है वो कितना है आपका, दैट इज 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर and available only 93% of the area. फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका 22% है, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड पे 5% आपका फैलो लैंड है, 8% आपका परमानेंट पास्चर है. वहीं लैंड यूज सिलेक्टेड कंट्रीज की बात करें विद वन अदर जो सेम है, आप यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो क्रॉप लैंड है वो 6 है, पास्चर 56, फॉरेस्ट 14 और अदर इज 22. ब्राज़ील का सबसे ज़्यादा फॉरेस्टेड एरिया है, दैट इज 66. इफ़ यू टॉक अबाउट कैनेडा, इट्स हैज़ अदर यूज. एंड इफ चाइना की अगर हम बात करें जो पास्चर है वो 34 है और फ्रांस में सबसे ज़्यादा क्रॉप लैंड है, दैट इज 34. राइट, देन वी हैव इंडिया दैट इज 37. नाउ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया. सो बेसिकली जो मेन लैंड है आपका इंडिया का, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल यूनिट्स. द नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन और जो अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपका बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी. सो इफ वी टॉक अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑक्यूपाइड बाय हिमालय. एक आर्क लाइक माउंटेन है, राइट. दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स फाउंड बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट कॉज्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट. वी हैव हाईएस्ट हिमाद्री, मिडल में हिमाचल है, लोएस्ट आपका शिवालिक है एंड वी हैव पेरिनियल रिवर ऑफ इंडिया इन विच वी हैव थ्रू आउट द ईयर क्या होता है, पानी होता है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र. नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है आपकी काराकोरम जो इंडस वैली और पैरीमार नोट पे रहती है. सेकंड हाईएस्ट पीक वर्ल्ड की माउंट K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन जो आपकी माउंटेन पे लाई. काराकोरम रेंज जो है वो एक्सटेंसिव स्नोफॉल है, लार्ज ग्लेशियर है, राइट. एंड यहाँ पे आपकी पटकाईबम, नागा, गारो, खासी, जंतिया हिल्री लाई करती है. वहीं हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन की, ये एक्सटेंसिव फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन है जो आपका साउथ ऑफ द हिमालय पे लाई करता है. ये मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सिल्क लेके आता है. एंड गंगा, सतलज, गंगा एंड यमुना इन द सेंटर और ब्रह्मपुत्र आपकी कहाँ है, ईस्ट में, राइट. सो वी हैड डकर एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आपका साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में लाई करता है, ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है. यहाँ पे आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक देखने को मिलेगा. इन वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा इट इज कॉल्ड छोटा नागपुर प्लेट्यू, वाइल मध्य प्रदेश और इसको कहा जाता है मालवा प्लेन. कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, राइट. इट इज नोन एज कॉन्कन और जो साउथ वाला उसको मालाबार कोस्ट. वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थार डेजर्ट है. इफ वी टॉक अबाउट लैंडस्लाइड्स,
सो ये सडन मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डैब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप, इसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं. पीसेज ऑफ समथिंग आफ्टर इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, इसको हम डैब्रिज कहते हैं. राइट. नेचुरल लैंडस्लाइड ऑफ्टन टेक प्लेस with earthquake, flood and volcano. They are caused by heavy rainfall for long time. Right. यहाँ पे क्वारिंग होती है. heavy landslides क्या करती है, जो flow of water को block करती है रिवर के. Now conservation of land resources. So people and their demands are ever growing, but availability of land is limited. So जो destruction हो रहा है forest cover का, now of arable land suitable for growing crop, human activities for fast development without thought are leading to land degradation. So making the land unfit for cultivation, deforestation, overgrazing, mining and quarrying, industrial effluent, water logging, industrial dust, they are the main causes of land degradation. So to check the land degradation, what you have to do? Afforestation, you have to plant more trees. Overgrazing को check करना है, land reclamation करना है, मतलब जो area of desert है उसको fertile land में convert करना है. Regulate use of chemical pesticide, treatment of industrial effluent. Now mitigation mechanism. So controlling a situation and making the effects of an event less unpleasant, harmful or less serious, उसको migration mechanism और technique कहते हैं. Right. Like to check intense blasting, especially in weak zone. Avoid weak zone building settlement. Vegetation को increase करो. आप surface drainage control करो and construction and retention wall to stop land from slipping. Next is soil. Weathering of rock, break them into stones, gravel, sand. And sand and clay are mixed in different proportion together. The breaking up and decay of rocks exposed to temperature changes, उसको हम weathering कहते हैं. ये process slow होता है, but it takes hundreds of years to make just a 1 centimeter thick layer of soil. Now the right mix of mineral in the clay and the humus. Here what you have to do, the soil has suitable elements जिससे growth of certain crop की क्या होती है, रुक जाती है. Now we have soil has 4 known layer. Top layer subsoil, right. Top जो soil होती है उसको किससे बनी होती है, ह्यूमस और फाइनल रॉक पैटर्न. और सबसॉइल सैंड, सिल्ट और क्ले से बनती है. बेडरॉक विच इज कंपोज्ड ऑफ अनअर्थ रॉक. ठीक है. Now degradation of soil. Soil erosion and soil depletion are the major threat to soil as a resource. जो removal होता है top layer of the soil on the large scale by rain, water, wind or humus is called soil erosion. It is depleted at many places by deforestation, overgrazing, over-fertilization and overuse of insecticides. So both natural and human factors they lead to soil degradation. Degree of soil erosion किस पे depend करता है? It depends upon the composition and texture of the soil, slope of the land, climate and method of cultivation. Now factors of soil formation. वो have parent rock जिसका determine करता है color, texture और chemical property. We have climate factor, इसमें आपका temperature और rainfall आ जाता है. We have biomass जो आपका रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है. टाइम जो थिकनेस ऑफ द सॉइल को डिपेंड करता है. एल्टीट्यूड जो आपकी डायरेक्शन को बताता है विद रिस्पेक्ट टू सनशाइन एंड विंड. और ये क्या डिटरमाइन करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. राइट. सॉइल आर फॉर्म अंडर specific natural condition in each elements of the natural environment in this process. It takes more than thousands of years, right? So air provides oxygen, nitrogen to the soil. जो किसके लिए होते हैं, essential होते हैं growth के लिए, plants के लिए, trees के लिए. Living organism include both vegetation and insect. They get mixed with the soil to make it useful for vegetational growth. The thick layer of soil easily from slopes, water flows speedily. On other hand, plains allow ideal condition for soil formation. On the other hand, long period helps soil to form thick layer and attain maturity because physical, chemical and organic action take place. So let's study about the soil of India. We have different soil that was given by Indian Council of Agriculture Research. We have alluvial soil जिसके fine particles of rock material होते हैं जो supervise करता है deposit the land river is called alluvium. Right? It is the most productive one in India and though low in nitrogen organic content but high in mineral content. Black soil is also called because of their dark color due to high content of humus in it. Right? Black soil is found in situ weathering. ये बेसाल्टिक रॉक होता है ऑफ द लावा प्लेट्यू, दे आर रिलेटेड टू पेरेंट रॉक. ये स्टिकी और हैवी होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है. द ब्लैक सॉइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, पार्ट ऑफ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात. रेड सॉइल एंड येलो सॉइल. This is derived from weathering of the granite genus, high moderate rainfall.
रीजन यहाँ पे आपकी कैल्शियम होता है जो आपका डेफिशिएंट इन होता है फॉस्फोरस, राइट। सो लेटराइट सॉइल ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड अपलैंड्स ऑफ असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। वहीं हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल, ये आपको ट्रॉपिकल रीजन मिलता है जहाँ पे तो सीजनल रेनफॉल बहुत हैवी होती है, राइट। इसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम देखने को मिलेगा, राइट। इट इज पुअर एंड नीड्स टू बी एनरिच्ड एंड फर्टिलाइज्ड, right? So we can say that these soils have mainly developed higher areas of peninsular plateau of the Western Ghats. ये कहाँ? Kashmir nuts are grown in Kerala in red laterite soil. Desert or arid soil, they are sandy, alkaline and porous, right? ये brown in color है. They contain very high due to dry climate, high temperature और accelerated evaporation होती है, ठीक है। ये आपका वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान, रन ऑफ कच्छ और पार्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब में मिलता है। सेलाइन सॉइल की अगर हम बात करें, दे आर ऑल्सो नोन एज उसारा सॉइल, दे कंटेन लार्जर पोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। एंड दे आर पुअर एंड फर्टाइल एंड डू नॉट सपोर्ट एनी वेजिटेशन ग्रोथ। दे आर वाइड स्प्रेड इन गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सुंदरबन और वेस्ट बंगाल। पिटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल, दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी होती है और गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं। माउंटेन एरियाज में देखने को मिलता है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होती है। ये कलर में वेरी करता है, टेक्सचर में ये डूमी होता है, सॉल्टी होता है, राइट। दे आर फाउंड इन द वेरी फर्टाइल रीजन एंड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। नाउ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, soil conservation is the effort made by humans to prevent soil erosion and depletion and thereby retain the fertility of the soil. Besides avoiding deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilization, pesticides, rainwash, landslide and floods. Floods, soil conservation, they can be done by the following. First is contour barriers. Like stone, grass, soil are used to build barriers along a contour. Right? We have rock dams that are piled up to slow down the flow of water. Then we have mulching, covering the bare ground between plants and organic matter like straw. Intercropping, growing different crops in alternate grows and sowing at different. Terrace farming, cut on steep slope. जो आप जैसे ना steep slope होती है, हम कट करके बनाते हैं। Now contour flowing क्या होता है? Flowing parallel to the contours of hill slopes. ये natural barrier होता है जिससे आप पानी के flow को रोक सकते हैं। शेल्टर बेल्ट कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन्स में बनता है जिससे हम चेक कर सकते हैं विंड की स्पीड और इरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ शॉर्टेज इन द फ्रेश वाटर सप्लाई, सो द ओशन वाटर इज अबाउट 97.3% ऑफ द टोटल वाटर बट इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सही नहीं है। वाटर क्या एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंट विदाउट द लाइफ ऑन द अर्थ। ये अनइमेजिनेबल है, दैट इज H2O, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सीलेंट डिसॉल्विंग सब्सटेंस है, इट इज रेफर्स टू एन वाटर प्लैनेट, 2/3 ऑफ इट्स कवर्ड विद वाटर, राइट। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गिवन फिजिकल एनवायरनमेंट, आर क्लोजली linked and interdependent and they cannot exist without each other. If we talk about global distribution of water, approximately 70.8% of Earth crust is covered with water. Major constitution जो है वो हाइड्रोस्फीयर है जिसमें आपके ओशन, सीज, रिवर, स्ट्रीम, ग्लेशियर्स, लेक्स सब होते हैं। There is a plenty of water available on the earth. We must remember that fresh or unusable water is only 3% of the total water. और जो 97% है वो आपका ओशन में है, राइट। नेक्स्ट इज योर सेलाइन और ओशन वाटर। द ओशन हैज ऑलमोस्ट शेयर लिविंग ओनली 3% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द लैंड मास। So due to salinity, the water is not fit for human consumption, but temperature controls the movement of the large mass of ocean. जो डेंसिटी है ओशन वाटर की वो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लोरा एंड फोना का एंड अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। वहीं हम फ्रेश वाटर की बात करें, इट इज अ सरफेस फ्लो थ्रू रिवर्स एंड वाटर कंटेन्ड इन द लेक्स, टैंक्स एंड रिजर्वोयर्स। रिवर्स आर फेड बाय रेनफॉल और मेल्टिंग स्नो, उनको फ्रेश वाटर कहते हैं, और स्मॉल फ्रैक्शन इज सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Now use of water resources. So we can say that water is natural resource of basic significance of living being. It is the fire of life that burns in water, right? Large quantity of water is consumed for domestic and agriculture and industrial purpose, right? So one of them was agriculture, that is greatest consumer of water. 65% जो है हम water का use करते हैं agriculture.
So human beings use water for cooking, drinking, bathing, washing, right, gardening in different ways. It is used for power generation, जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर स्टेशन में हम इसका यूज करते हैं, राइट. वाटर स्कार्सिटी, world population has been steadily increasing, more and more people are leading a good life. There is ever increasing demand for resources like land and soil has been recklessly used, right. Water requirement in homes is continuously rising, underwater is being drawn up in an increasing quantity. Now conservation of water resource. So the earth resource must be used in planned and manner with regard to their continued availability. This concept of conservation of resource is aimed at achieving highest possible quality of life. So we can say that measures of conservation and management of water should include following basic approach. एक तो आपको रिडक्शन करना है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इम्प्रूवमेंट करना है वाटर इकोनॉमी में, डेवलपमेंट करना है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. नाउ रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ वाटर, ये मेजर टास्क है जो क्या करता है, रन ऑफ और इवोपरेशन लॉसेस को रिड्यूस करता है. ये ट्रेडिशनल मेथड है इरिगेशन का. बेटर टेक्नोलॉजीज आर नीडेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन हाईली एफिशिएंट मेथड है दैट कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप. ये वाटर को सप्लाई करता है टू प्लांट्स नियर द रूट्स थ्रू द स्टेम और टूल्स. इंडिया की जो फूड रिक्वायरमेंट है वो ग्रो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एडॉप्ट करने पड़ेंगे इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम जो किस पे बेस्ड है, एडवांस मेथड. एफ्लुएशन फ्रॉम सेटलमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आर पॉल्यूटिंग वाटर. इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज इज डन, राइट. सो द ग्रेट एम्फेसिस टूल्स आर लेड ऑन रिक्लेमेशन एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, जिसमें आपका म्युनिसिपल वाटर होता है, रिसाइकलिंग द यूज ऑफ वाटर. Creating awareness among the common people was danger of water crisis. Right? Then we have rainwater harvesting. So it involves artificial recharge of underground water by allowing rainwater to seep underground. Main objective क्या है इसके? Reduce runoff, augmentation of groundwater storage. आपको water टेबल को रेज करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को, ओवरकम करना है प्रॉब्लम ऑफ फ्लडिंग एंड स्टैग्नेशन ऑफ वाटर. Recharge the groundwater aquifers for perennial availability of groundwater. Now development of appropriate technology. Construction करना है आपको small reservoir and catchment dams का. Development of technology for treating and recycling municipal waste. Development of suitable technology for desalination of seawater. Government plan for linking river to ensure diversion of fresh water. Right? And then we have watershed management. In context of rainwater harvesting and conservation of water, right, watershed refers to basin of a river. It has small stream or it may not have any stream, but whenever it rains, the water flow it's finally to join some stream. If we talk about construction of dams, a dam क्या होता है, एक बैरियर होता है जो flowing water को obstruct करता है. What it do? It's obstruct the flowing water and directs to regulate the flow, often creating reservoir, lake or impoundment. Right? Many large and small dams are built. Now, according to estimate of Water Commission or Dam Report 2000, what happened? There are about 45,000 of large dam in 140 countries, and there are about 22,000 dams in China, 630 in USA, 4,291 in India, about 1,200 in Japan, 1,000 in Spain. These projects are designed to provide irrigation, generating electricity, flood control, conservation of soil and water, fish culture, land decommission, right? So we can say that investment in these projects certainly brought prosperity and happiness to Indian nation. Jawaharlal Nehru proclaimed that जो dams होते हैं as the temples of modern India, इनको हम temples of modern India कहते हैं. And village economy with rapid industrialization, many dams have been set up near the large alluvial dam. जैसे आपका हार्बर डैम हो गया, कोलोराडो रिवर हो गया, right? So we can say that Oxbow Dam constructed in Ghana for supplying cheap electricity for large aluminium plant. So deforestation, regulating damming of rivers affect the natural flow of poor sediments flow and sediments at the bottom of the river. Major problem क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन इन द एनवायरमेंट मूवमेंट जो नेचुरल लैंडस्केप को क्या करता है, रोकता है. Right, 10,000 of Adivasi, Dalit and middle class women participate in the movement and they were against the Sardar Sarovar Dam, जो आपका नर्मदा रिवर पे बना. Now conservation of water resource. Even though water is renewable resource, its overuse and pollution have caused what? Scarcity of water.
क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है इनट्रेटेड वेस्ट का, राइट. दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट दे कॉज हेल्थ हैजर्ड. क्या कॉज कर रहे हैं? हेल्थ हैजर्ड. नाउ मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स. सेव रेन वाटर. आपको सेव करना है रेन वाटर. प्लांट ट्रीज एंड मोर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस ऑफ रन वाटर. रीस्टोर ट्रेडिशनल पॉन्ड्स, टैंक्स एंड लेक्स टू स्टोर रेन वाटर. फिर आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है डैम, जिससे आप सरप्लस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हो. ठीक है. स्टोर रेन वाटर एज इट फेल्स फॉर वाटर हार्वेस्टिंग. सेव इरिगेशन वाटर. लाइन अ पैड ऑफ इरिगेशन. Use water in sprinkler and use drip or trickle irrigation through holes in the network of underground pipe. Save water in industry. Reuse water once used for cooling pipes. Treat the effluent suitably. Save water in homes. Do not take shower to bath instead of bucket. Install water saving taps. Right? When we have closed tap, immediately. आपको close करना tap को immediately when you use it. Then we have river valley project. Water is stored by making dams on rivers so that it is available in dry season. Extensive network of canals is laid in the river valley. Such projects are multi-purpose as they give several benefits. Irrigation to drought-prone area. Controls of flood, generation of electricity, providing water for domestic use. Right? Minor irrigation projects like making ponds, tanks have been found more suitable for remote villages and they are self-sufficient in water. Right?